जब प्रोफेसर कॉलेज जा रहा था, वह दोहरा रहा था, मैं अपना छाता नहीं भूलूंगा, मैं अपना छाता नहीं भूलूंगा। परंतु उस दिन उसने छाता ही नहीं ले गया। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचा, उसने एक छाता पड़ा हुआ देखा। उसने उसे उठा लिया। एक औरत ने उससे पूछी, तुम मेरा छाता कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, सॉरी मैडम, और छाता लौटा दिया। प्रोफेसर ने सोचा, यह औरत मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं एक छाता चोर हूँ। शाम को वो छतरी की दुकान में गया। उसने आधे दर्जन छतरियाँ खरीदा। वह बस से घर आ रहा था। वही औरत बस में बैठी थी। उसने छतरी की ओर देखी और प्रोफेसर से कहा, आज तुमने अच्छा धंधा किया। The next day, when the professor was going to college, he was repeating, I will not forget my umbrella. I will not forget my umbrella. But that day he did not take his umbrella. When he reached the bus stop, he saw an umbrella lying there. He picked it up. A lady asked him, where are you taking my umbrella? He said, sorry, ma'am. He returned the umbrella. The professor thought, what will this lady think about me? That I am an umbrella thief? In the evening, he went to an umbrella shop. He bought half a dozen umbrellas. He was returning by bus. The same lady was sitting in the bus. She looked at the umbrellas. She told the professor, today you did a good business. 哎呦我的妈！